What is up guys, कैसे हो आप लोग? Welcome back to another video on the 23 Rides channel and I think आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मैंने अपनी ADV 390 में Xpulse 200 का सस्पेंशन लगवाया है and after that I didn't get a lot of chance to ride the motorcycle. So today being a Friday I am taking this bike out and riding towards Atal Tunnel, towards Sisu, towards Lahore Valley. This will be a good 4-hour ride, 2 hours going, 2 hours coming back, maybe spending an hour there. This should give me a good idea of how the Xpulse 200 suspension is performing on the ADV 390. So there is the Xpulse 200 suspension, the red spring that you see, that's a helmet and you see the dust has settled in. So let us get on the bike. It's a beautiful sunny day and यहाँ पे ना धूप का कोई भरोसा नहीं है इस एरिया में. शाम तक रोज़ बारिश होती है और इस चक्कर में बाइक को मैं ज़्यादा चला नहीं पाया. The bike as you see is a little dirty. So let us get going bro. ये गड्ढों में से मैंने जो निकाली है जिस तरह से बाइक, ये पीछे एक गड्ढा था. एक्चुअली गोप्रो पे ये फ्लैटन आउट हो जाती है, फुटेज तो दिखता नहीं गड्ढा कितना गहरा था, बट इट वाज लाइक अ नॉर्मल इंडियन रोड पॉट होल. एंड इस पे ट्रस्ट मी बैठ के निकालना ना एडवेंचर 390 को एक हमेशा पेन लगता था, विच इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अ इशू राइट नाउ. ऑफ कोर्स जो थोड़ा बहुत अभी डिस्कम्फर्ट है वो फ्रंट सस्पेंशन के कारण है. उसकी हल्की सी ट्यूनिंग अगर हमने कर दी तो ये बाइक पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. वो भी करेंगे यार, टाइम आएगा धीरे धीरे. बाय द वे व्हाट अप यू गाइस, वो या राइडिंग इन द ट्विस्टीज इज आई थिंक द मेन कंसर्न फॉर द फोक्स हु आर आस्किंग मी द क्वेश्चन कि Xpulse 200 का सस्पेंशन कैसा फील होता है. KTM's की ना यार हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया होती है, जैसे सबको पता है. यू जस्ट थिंक कि मेरे को बाइक को राइट लेना है एंड बाइक फटाक से मुड़ती है उस डायरेक्शन में. दैट्स हाउ गुड हैंडलर्स द KTM मोटरसाइकिल्स आर. बट जो टूरिंग के हिसाब से हम लोग मॉड्स करवाते हैं ना, उससे हैंडलिंग थोड़ी सी तो सफ़र करती है. जैसे जो फर्स्ट मॉड जिससे हैंडलिंग हल्की सी सफ़र करेगी आपकी एडवेंचर 390 पे, वो है जब आप राइजर्स को इंस्टॉल करवाओगे. एंड राइजर इंस्टॉल करते ही आपका राइडिंग ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, हैंडल ऊपर आ जाता है एंड इट डजंट फील एज रिस्पॉन्सिव, राइट. एंड उसके बाद इफ़ आई कंबाइन दैट चेंज विद द चेंज इन द सस्पेंशन विच इज़ ऑल्सो रेजिंग द हाइट ऑफ द मोटरसाइकिल, तो डेफिनेटली यार हैंडलिंग में थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज़ होगा. सो डोंट थिंक कि आपकी बाइक बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही शार्प हैंडलर रहेगी अगर आप फॉर एग्जाम्पल राइजर्स नहीं लगा रहे और एक सस्पेंशन ही चेंज करवा रहे हो सिर्फ. ब्रेकिंग पे भी आई एम ऑब्जर्विंग देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डाइव. जब सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ता है तो डाइव या सस्पेंशन कंप्रेस कैसे होता है जब आप ब्रेक मारते हो, उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आता है. बट सिंस वी हैव ओनली चेंज द रियर सस्पेंशन, सो इतना ज़्यादा कोई डाइव फील नहीं होगी. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप ब्रेक करते हो तो मोस्टली फ्रंट ब्रेक को ज़्यादा यूज़ करते हो एंड फ्रंट सस्पेंशन तो हमारा स्टॉक ही है, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क फील नहीं हो रहा ब्रेकिंग के हिसाब से. एंड ऐसा भी नहीं है कि पीछे वाला जो एंड है बाइक का वो ऐसा वॉबल कर रहा है ब्रेक लेने में. एटलीस्ट फॉर माई टाइप ऑफ राइडिंग, आई एम राइडिंग बिटवीन लाइक 80-90 मैक्स, राइट. इस रोड पे इससे ज़्यादा क्या तेज़ चलाऊँ यार. भाई क्या पलटा दिया, पूरा का पूरा ट्रक ही पलट गया. बताओ यार. मेरा यूजेज इज मोस्टली फ्रॉम अ टूरिंग स्टैंड पॉइंट, और इवन इफ आई डोंट टूर, माई राइडिंग स्टाइल इज़ वेरी वेरी सिडेट. आई एम नॉट वन ऑफ दोज एग्रेसिव राइडर्स. फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उतना एग्रेसिव चला ही नहीं सकता बाइक को, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा. बट जिसको लिटरली बाइक को वैसे ही चलाना है
शार्प तरीके से, एग्रेसिव तरीके से खींच के चलाना है, कर्व्स पे फुल ऑन लीन करना है. I don't think so this sort of an upgrade is for those people. We are in Manali and now we'll head towards Rohtang. Oh wow, what a view of the river, yaar. Wow. So guys, this is the view. Riding in the narrow roads of Himachal on your Adventure 390 in the winter afternoon, winter sunshine, and that is the view that you have accompanying you. Those mountains, the big Himalayas covered with snow, they just look beautiful right now, shining in the sun. And we cross Palchan. Wow, what a view. Crazy. One of the best feelings of riding in the mountains, going into the Atal Tunnel on the Adventure 390, and surprisingly they are not stopping. You know, the videography, I thought it was actually the worst time to get into the tunnel because there is a bus in front of me that is, you know, धुआं निकाल रही है proper. तो 9 किलोमीटर तक इस बस का धुआं झेलना पड़ेगा, बताओ. But yeah, the big part is that we are out, and yes, we are. Wow. क्या बोलूँ मैं, एकदम smooth powdery snow on the right, as you can see. Look at that sun beating down literally, and all the snow that you see, that's gonna melt away maybe like in a week's time अगर sun ऐसे रोज बाहर आता रहा. And that is the portal of the Atal Tunnel. This looks amazing, right? एक mountain के end पे एक hut बनी हुई है, and उसमें से सारा traffic निकल रहा है. Imagine the width of the tunnel, almost like 10 kilometers. Cross section of the mountain. Wonderful. And some bad patches as well. Stand up and get through them because now you have a Xpulse 200 suspension, yeah. So seemed very easy. The bike was just floating over the bad patches. Is there anything more beautiful than riding in such a location, guys? You're riding in the mountains, and the road, look at that road, just, you know, taking those curves and taking you along the mountains. These sections, these winding sections are just amazing. And what makes them look even more beautiful is that there is no boundary. There is no, I would say, safety rail on the left side, which is risky, but at the same time makes your riding feel so much more enjoyable. Wow. Woo, going towards the snow mountains. This is like a great location. Look at the view all around, guys. Wow, a beautiful mountain, and this is where we kind of take a U-turn from. Before I turn back, I wanted to share my final thoughts about the Xpulse 200 suspension. First things first, I feel this suspension is very pliant. It's not one of the suspension that will make your bike bounce like a maniac, because while I was riding on the road towards Atal Tunnel from Kullu, we did maybe about a 70-kilometer stretch, and the bike was riding very stably. I feel that
while riding the motorcycle on the curves, you will obviously feel a little bit of difference, like I was saying while I was riding, but that is something that you will get used to very easily. Apart from that, there are three types of people who should not make this change to the suspension. Number one is if you are having a height which is like 5'5", 5'6", 5'7". So I mean, the new suspension, this Xpulse 200 suspension, actually raises the seat height of the motorcycle. And as you know, the ADV 390 has a 850 mm seat height. 850 mm वैसे भी ज़्यादा होता है, but with this new suspension, easily 10 centimeters और height बढ़ गई है seat की, which will be a problem for folks who are short in height. That is number one. The second type of people who should not upgrade to this suspension is folks who want to enjoy the handling of the KTM, because with the suspension the height increases and the handling on the corners, on the twisties, if you are wanting to ride very aggressively, suffers. That is the second type. And the third type of people who should not actually make this change to the suspension are the folks who like to load up their bike big time. Big time means not normal touring type of loading, but if you are putting everything on the motorcycle and making it very heavy, maybe like a camping gears, lot of stuff on the motorcycle, loading it to the capacity, and you yourself are very heavy. When you do that and then you ride off roads at very high speeds, I have a friend who told me that sometimes this suspension just compresses and does not come back. So if you are wanting to load this up big time and ride aggressively after that, then this might not be the suspension for you. Maybe you can look at the other suspensions that come in the market from Z-Link, like 18,000 rupees, or you know, that sort of a spend. But for general use, for normal touring, I don't think this is going to create an issue. Let's see how this one lasts. So far I am very happy, and I'll definitely be keeping you posted on how this suspension is performing. So that is it for this video, guys. I hope you like the views all around. It was a short and sweet ride on a Friday afternoon, and my intention was to test out the suspension, which I did. Of course, I'm not able to find a very safe off-road trail here. That is something that I'll do hopefully tomorrow or day after tomorrow, and I'll be sharing a video on that as well. I'll see you in the next one, guys. Bye bye.